फ्रेंड्स, सो आज हम देखने वाले हैं शोरबर्ड. सो व्हाट इज शोरबर्ड एंड व्हाई इट इज यूज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शोरबर्ड is like can say that platform or tool especially for the Flutter to push the code. But ये एक जो अपना एक प्रोसेस रहता है कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, राइट? बट इट इज लाइक if you'll go Play Store through to release the applications, it take time. Through Shorebird for release, it also taking time. But for patch, like if आपने कुछ एप्लीकेशन रिलीज किया है और उसमें उसी टाइम बग आ गया, कुछ कुछ इश्यू आ गया, सो यू वांट टू फिक्स दैट पैच on the instantly, but it does not happen in the through the Play Store process, right? We first release new version and then हम upload करते हैं Play Store पे, and then we wait for the approval through the Play Store. But through the Shorebird क्या होता है कि उस अप्रूवल और उसका टाइम बच जाता है मिनिमम इन सेकेंड्स और मिनिमम मैक्स टू 1-2 minutes. इट्स अपडेट टू ऑल एग्जिस्टिंग यूजर्स. दैट इज अ पैच. सो इसमें क्या होता है कि आपका जो रन टाइम डाट रन टाइम है उसके थ्रू वो चेंजेस इंस्टॉल ऐप पे हो जाती है. सपोज देन कि आपने एक मैंने अभी एक एप्लीकेशन पब्लिश कर दिया प्रोडक्शन पे और मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है सपोज देन 10,000 और मोर देन दैट और 1 million. इंस्टेंटली समथिंग हैपन कि वो ऐप किसी फीचर में या कहीं भी वो क्रैश हो रहा है, कुछ कुछ भी हो रहा है, तो मुझे इंस्टेंटली एक पैच रिलीज करना है. मैंने वो फिक्स किया डार्ट कोड में एंड मैंने शोरवर्ड के थ्रू उस पैच को पब्लिश कर दिया. तो इन अ मिनट्स और सेकेंड्स एग्जिस्टिंग यूजर में वो पैच रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो उनका जो इशू है वो भी है वो अपडेट हो जाएगा कोड थ्रू द रन टाइम. सो अगर आप ऐसे सर्च भी करते हो तो आप देख सकते हैं इट्स नॉट फ्री लाइक ओपन सोर्स. देयर इज अ लिमिट. सो देयर इज अ फ्री सब्सक्रिप्शन आल्सो एंड डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस. सो आपका फ्री है, इसमें लिमिट है, ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडेड पेस 5,000. उसमें लिमिट भी है कि उस एप्लीकेशन को कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं. 5,000 अगर यूजर यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज फ्री. मोर देन दैट देन देयर इज आर पैकेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट इज गिवन फॉर एवरीथिंग. सपोज देन कि आपको ये रिलीज करना है सीडी के थ्रू, कोड पुश करना है, राइट? और सभी इसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं जो हम देखेंगे. जैसे कि ये रिलीज का भी दिया है, इधर रिलीज कैसे करना है, पैच का दिया है, और ऑफ कोर्स शॉरबर्ड की कमांड है जो हमें कमांड के थ्रू करना है. सो फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे इसका, तो मैं अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके सब वन बाय वन. सो ये इंस्टॉल करना है हमें फर्स्ट, सबसे पहले क्या, शॉरबर्ड. सो कमांड थ्रू कर सकते हैं आप. एक कर्ल कमांड है जो कि इसको हम टाइप किया तो इंस्टॉल रन कर दिए मैंने ऑलरेडी. ये इंस्टॉल हो गया है एंड आप देख सकते हैं कि पूरा ये रिपोजिटरी क्लोन करता है लोकली. आई एम यूजिंग मैकबुक. सो जो मेरा यूजर्स है रूट, वहाँ पे आप ये देख सकते हो यूजर्स अनिल शर्मा डॉट शॉरबर्ड. सो वहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएगा और उसके अंदर पूरा इंस्टॉल कर लेगा शॉरबर्ड. शॉरबर्ड लेटेस्ट फ्लटर वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा है, राइट? वो आप देख सकते हो, डार्ट वर्जन. सो 3.35.7 इज़ द फ्लटर लेटेस्ट वर्जन इट्स यूजिंग. बट हम बाद में देखेंगे कि आप वर्जन भी चेंज कर सकते हो. और इवन आपका प्रोजेक्ट फ्लटर वर्जन दूसरा यूज़ कर रहा है लेकिन आप रिलीज़ करते टाइम भी मेंशन कर सकते हो. तो ये देखिए, अब ये डायरेक्टरी का पाथ है पूरा. और ये हमें हमारे इसमें आप जो भी बैश फाइल है या ZSS फाइल है उसमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि शोरबर्ड कमांड को हम यूज़ करेंगे. जैसे आप फ्लटर का कोई भी रिलीज करना है तो फ्लटर कमांड थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप कोई वर्जन मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हो फ्लटर का, जैसे FVM, उसके थ्रू भी कर सकते हो. तो उसके लिए करना पड़ेगा. सो सबसे पहले तो हम पहले इसको एक्सपोर्ट करते हैं. लेट्स सी, कॉपी पेस्ट.
तो अभी हम शॉरबर्ड रन करके देखते हैं कमांड. Okay, spelling mistake. Now it's see, you can see Shorebird, we are able to run Shorebird command, and we can see in another terminal also it's working fine, hopefully. Yes, it's working fine. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं शॉरबर्ड की जो आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं अगर क्रिएट करना है फर्स्ट कोई पैच रिलीज करना है आपको, है ना. इनेट शॉरबर्ड क्योंकि अभी तो हमने इंस्टॉल किया है, बट उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिफरेंट डिफरेंट कमांड. जैसे कि आपको मालूम होगा फ्लटर में भी पब गेट करते हैं डॉक्टर, सो इसमें भी डॉक्टर कमांड है जो कि हम शॉरबर्ड डॉक्टर, सो दैट कैन देन चेक एवरीथिंग इज फाइन सेटअप फॉर शॉरबर्ड. एंड until we have just installed Shorebird, so we'll check आगे की लॉगिन कैसे करना है. उससे पहले हमें पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा. So let's check, I'll show you. तो फर्स्ट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे. लेट्स गेट स्टार्ट. एंड गेट स्टार्ट के बाद जैसे भी आप लॉगिन करना चाहते हो जीमेल के थ्रू, तो जीमेल मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है. सो इफ आई क्लिक एंड इट विल डायरेक्टली ओपन जो भी मैंने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड किया है. बट आपको यहाँ डैशबोर्ड पे एप्लीकेशन भी रजिस्टर्ड दिखेगा, और जब उस एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे डेट पैच एवरीथिंग इट विल शो. So before running the Shorebird login, you make sure that you have already registered on the Shorebird portal. Once you register by that same mail ID, after that you can run Shorebird login on your. So I have already registered, and let's check. We run Shorebird doctor command directly, not init. We must be use first command Shorebird init, but let's try this way. Of course, it's expected it will give the error that Shorebird YAML is not present in the pubspec YAML files. So we can run as this giving error like Shorebird doctor fix. So it will add that pubspec shorebird.yaml in the pubspec YAML as a asset, but it will not create the shorebird.yaml file. For that we need to run init command. So this is init command that we need to run to create shorebird.yaml file that must be required, right? So let's try Shorebird init, and it will take few seconds to create a shorebird.yaml file, and we will see here that this is very required file for the Shorebird that will create app ID that is public, or you can keep it on the GitHub also, no problem, because it's just required to identify, or whenever you publish the patch, so recognize that it is your applications Shorebird. So let's see. Yeah, so it's created. You can see in the our repo that shorebird.yaml file is exist, and you can see that app ID is unique identified, this one. It is like identify your app when requesting patches from Shorebird server. Okay, because जब आप पैच बनाओगे तो वो Shorebird के थ्रू डायरेक्टली एग्जिस्टिंग कस्टमर को मिल जाएगा. आपको प्ले स्टोर पे जाके पैच या न्यू रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस बेस में. सो उस बेस में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो इससे ये हो गया है. But after that we can see there are two errors. Actually that's only warning or error, but that is clear in message that we have not add that pubspec.log and pod file.log file to the our git. So we will push that file. I'm pushing that log files. I'm doing fast forward it because it's an easy step. It's just I'm checking on the GitLab, this project on my own GitLab, that file is present in the same branch or not. So you can see there no, that file is not exist. So I'll add that file to Git and then commit and then push. So you can see that
I will see the error when I'll push, because I have these two files in my git ignore. You can see here. So first I need to remove here from git ignore, or there is other way, like you just go to the file and right click, and then you can add here also git. So it should not be in the git ignore, and then we are pushing that files to the git and refreshing. As you can see, that file is present here. So we have pushed. Creating release, Shorebird release, but let's check first Shorebird command is working or not. Yeah, so we'll check document also for Shorebird, but I'll mention here, like you can see, my version, my this application is 3.27 Flutter version, but when we run Shorebird release Android command without giving the version mentioning, it will use latest version of Flutter. So be careful when you execute, always this version, always use this one, Flutter version. So it will use whatever version your application is using. So see, I get the error. So I'm first trying this one, that giving in the error hint with the all this command, Shorebird, this one, release target platform. Through this also, it will create a release binary, and we'll wait for some minutes or some seconds. Let me forward it. Yeah, it's executed. It take little time. It's just burning, so don't worry about that. So release binary is done, and if I'll go give without version, then it will give error again, because it's using 3.9.2, that is the Dart version for the latest Flutter. So now I try with specify the Flutter version that I'm using, 3.27. So let's try with the Shorebird release Android hyphen Flutter, and then provide 3.27. So it will take again some time. So now it will not give error because I specify same version that my project is using. It will just ask continue with the same Flutter name or Flutter application version. We need to confirm and say continue. It will take time to download that Flutter version, Dart version. Yeah, it's created release binary, and you can see here that all information about this bundle file, and this is the so after release published first with Shorebird, I am creating this second half once it that release with the Shorebird. So I'll create here patch,
And let's try with the Shorebird patch and document. You can see command here, Shorebird patch Android. So अभी हम इस कमांड के थ्रू Shorebird patch बनाएंगे एंड व्हेन हम ये कमांड यूज करते हैं तो उसमें अभी आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट ये वर्जन आ गया जो हमने लास्ट टाइम पब्लिश किया था बिकॉज कि जो पब्लिश वर्जन हो चुका है उसी वर्जन के लिए हम पैच बना रहे हैं ओके सपोज देन आपने लास्ट टाइम 3 वर्जन रिलीज किए सपोज देन 11 10 9 सो आपको मालूम है कि 9 वर्जन में ये इशू है तो उसके लिए पैच बना सकते हो या फिर लेटेस्ट के लिए तो आप अभी मैंने जो कमांड रन किए है वो विदाउट एनी मेंशन वर्जन किया है तो वो क्या करता है लेटेस्ट वर्जन रिलीज को ले लेता है अगर आप डॉक्यूमेंट में देखोगे तो वहाँ पे हम वर्जन भी मेंशन कर सकते हैं तो ये पैच अपना रिलीज हो गया है बंडल फाइल इज not generated it's already was there or if it not there in our root project it will generate for that and then this patch is created for that so patch is done for that version you can see here and if we'll see this version on the our we'll go Play Store let's see wait for that yeah now is patch 1 is released okay now we'll go on Play Store as well first we'll see here that patch is visible here or not yeah we can see we'll need to go in that version 11 and 12 so page 1 is just 28 seconds ago we have created it okay I can see it but I'm not able to like what change because we have not changed anything in our code and we can say here on a store it will not update anything because it's patch and we have not released let's see some change in Dart code so I'll just try to little bit change and create new patch so we can see in the existing applications that changes okay so I just do a little bit color change let's run first yeah so I just color change but if any issue there and patch it's like that so we'll generate patch again same way for the um, same version so I didn't mention any version it will take latest one let's try or we can try to specify the wrong version okay so I'll you can see here in document release version so we'll try that command here this one release hyphen f1 release version and I'll mention there are some my old version or if it's not exist there then it will give the error for that this version is not publish or that like that if it is published then it will generate patch for that so I'll try same version 1.0 point okay so this is wrong version 12 okay expected give the error so let's try with latest version yeah as expected with latest version it will generate patch okay you give yes okay wait for generating it it will generate patch 2 yeah 2 is created I can see in my application that changes
and this is patch 2 is also available.